प्रोडक्ट जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो हमें थोड़ा फ्री होना पड़ता है और प्रोडक्ट्स को उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेप्स में ज़्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं, पहले स्टेप्स कम रहते हैं। सो अभी आज आप लोग देखोगे कि काफ़ी सारे और प्रोडक्ट्स भी ऐड आएंगे स्टेप्स में। Fantastic, yeah. Thank you. But one thing look, there's some pictures of me and you. I think we can flip past that. But one thing that doesn't change is our brand's vision, and that is to empower every single stylist. That is our North Star. The stylist is our North Star. Our SOP might change, but our North Star remains the same, and we want to empower every single person in this room and everyone that uses K18. एक चीज़ जो नहीं बदल रही है वो है कि हम आप सबको इंस्पायर करें ये प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हो। SOPs बदल सकती हैं, प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, बट मेन मोटो है कंपनी का कि आप सब ये प्रोडक्ट्स को अच्छे से यूज़ कर सकें और इंस्पायर हो सकें हमारे स्लाइड। Yeah, I love this slide. So I work for K18, however I'm a hairdresser first. I love hairdressing, I still do hairdressing. I love working with hairdressers. So if you want to talk hair, I'm your woman. But this picture on here, these are the kind of things I love doing. I love doing vivids, I love creating. And so for me, this is where K18 came in, because it meant that all of a sudden things weren't hard work anymore. It was easy to remove colour and replace it with something else. And it's still have good condition hair. So पॉला का कहना है वो एक हेयरड्रेसर पहले हैं बिफोर K18 ब्रांड को जॉइन करने से पहले, और उनको बहुत पसंद है हेयरड्रेसर्स के साथ काम करना, हेयरड्रेसर्स के साथ मिलना, डिस्कस करना। तो दिस इज़ हर थिंग। और जो आप स्लाइड में देख रहे हो जिस टाइप की कलरिंग है, किस टाइप की कलर्स आप देख रहे हैं स्लाइड में गाइस? फंकी कलर्स, क्रेजी कलर्स व्हिच आर वाइट, विविड, उसको हम विविड बोलते हैं। एंड पॉला इज नोन फॉर डूइंग सच काइंड ऑफ कलर्स। सो उनका कहना है कि ऐसे कलर्स करने के लिए आप जनरली आपको चाहिए, आप जानते हो कि स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी चाहिए बालों में, हम क्लाइंट को जब ये कलर्स कर सकते हैं। और ये इस प्रोडक्ट में बहुत विश्वास रखती हैं कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने से ये ऐसे कलर्स आप कर सकते हो और बिल्कुल मुश्किलें नहीं आती। Fantastic. You always add a little flavour. I like that. So for myself, my experience is I was born in the salon. So I come from a family of hairdressers. My mum, my dad, my sister, myself, my auntie. It's within our DNA. So to have products like K18 to make our life easier, shall we say, is a fantastic thing. And we're going to explore a little bit about what makes K18 different compared to everything else that's out there in the market. So आप डेली सैलून में आप देखते हो कि प्रोडक्ट्स दिन ब दिन नए नए आते हैं, बट ऐसा K18 ब्रांड से आप लोग को क्या फ़ायदा हो सकता है वो बताएंगे। और ये प्रोडक्ट्स को आप डिफरेंटली, ये प्रोडक्ट्स में डिफरेंट क्या है जो आपको सैलून में हेल्प करेगा ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए। I will just add, he always wanted to be a hairdresser. I never wanted to be a hairdresser. I wanted to be a policewoman. And I became a hairdresser because my mum said, don't do hairdressing. So I went, I'm going to show you. And I did. And she's also, oh sorry Neil, do you want to translate that? Got it. Okay, perfect. Paula is also very modest. Not only did she run multiple salons, and she's also an award-winning colorist as well. So vivids are her thing, but also running a successful business is also a thing. Exactly, round of applause. Yes. Okay, so the K18 difference. So we have our North Star, we have our stylists, so that's what we're looking for when we're thinking about innovation. But there's also three other things that we think about, and we think about the efficacy of the products. So that's how it performs, and it does as we expect it to do. So products का performance जिसको बोलते हैं efficacy, वो depend करता है कि ये products कैसे काम करते हैं। So ये product की सबसे पहले यही है कि हम efficacy के बारे में बात करेंगे कि ये product कैसे perform करता है। So at K18, as you all know, we are about repair, and repair at that molecular level. And to do that, we use something called biomimetics. And if you were here early enough, you would have seen the video on loop, where it talks about our inspiration that we take from nature. So K18 के बारे में जब बात कर रहे हैं तो ये बात करते हैं हमारे
हेयर को रिपेयर करने के लिए प्रोडक्ट्स बने हैं हेयर को रिपेयर करने के लिए सो वो भी मॉलिक्यूलर लेवल पे और इससे पहले जो वीडियोस चल रहे थे आप लोग ने उस वीडियो में देखा है कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट बायोमिमेटिक साइंस को लेके काम करता है. And it's that biometric science that allows our efficacy to be the best in the industry. We'll come to a slide in a minute where we talk about the journey of our brand and the journey of the industry from cosmetic chemistry right through to biomimetics. So you need to celebrate one another for working with a brand that is changing the industry, which is amazing. बायोमिमेटिक ये टेक्नोलॉजी जो हमारे ब्रांड को आगे ले जा रही है और पहचान दिला रही है इसके टीम जाना जाता है इसकी टेक्नोलॉजी के लिए और इसकी वजह से ही हम ये एफिशिएंसी ला पा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स में. सो अभी ये वीडियो दिखाएंगे आपको कि प्रोडक्ट जर्नी हमारे प्रोडक्ट की अब तक की. So then we have simplicity. So as you can see behind Paula and on the screen here, we're a very simplistic range. We're intentional with the products that we bring out because again our North Star as a stylist, they direct the choices that we make as a brand. So प्रोडक्ट्स की सिंपलिसिटी हमारा सेकंड डिफरेंस है कि हम प्रोडक्ट्स काफ़ी सिंपल बनाते हैं कि हेयर ड्रेसर्स उसको सिंपल वे में यूज़ कर सकें और इस प्रोडक्ट्स को अच्छे से इफेक्ट उसका लाभ लेके आए. तो वो हमारे खासियत है कि हम प्रोडक्ट्स काफ़ी सिंपल बनाते हैं जो आप यूज़ कर पाए सैलून में और आपकी सर्विस बेटर. But simplicity doesn't mean that something is basic. Simplicity in our case means that it's well thought out and we want to take as few steps as possible and be intentional with products that we bring out. We recognise that service is such a big part of the industry here. So when we talk about simplicity, we need to think about it not being simple, but the fact that it's still elevated. It's very expensive ingredients, it's very expensive science and research that's gone into manufacturing this product. Simplicity doesn't mean that it's basic. सिंपलिसिटी का मतलब भी कह रहे हैं कि सिर्फ बेसिक नहीं है ऐसी कोई चीज़ नहीं बना रहे हैं कि हाँ आप उसको भी बहुत ही सादा चीज़ है. हम इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ताकि ये प्रोडक्ट इस अच्छे से काम कर पाए और आपको बेटर रिजल्ट दे. उसका मतलब है सिंपलिसिटी जो हम कहना चाहते हैं. And likewise with speed. So speed is the third pillar that we have. So we want to be effective as a product that we're using. In some markets, speed is important. We want to do and we want to move, do and move, do and move. Here, we want to take a little more time. We want an experience. So we're going to go through today a new ritual for in the salon where we can extend that service. But we say the speed is important because that's the maximum amount of time, or sorry, the minimum amount of time for the peptide and the K teams to work within the hair. So हमारे ब्रांड की एक और खासियत वो है स्पीड कि आपको बहुत ही कम टाइम में अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं. वो हमने खास करके सोच के बनाया है. सो हम चाहते हैं कि क्लाइंट को हम जितने कम टाइम में उनको अच्छा रिजल्ट दे पाए और आप क्लाइंट को केटर कर पाए रिजल्ट्स भी दें और उस टाइम में आप उनसे सर्विस भी दे पाए क्लाइंट को. Anything you'd like to add? No, I think you're doing an amazing job, thank you. Thank you. I have to fight to get a word in sometimes. Do you want to start off? No, you don't. Okay, thank you. So we're both very excited about talking about K team. Okay, I'll go first. You go first. I'll go first. So for me, when I first started hairdressing, there was this obviously molecular repair, biomimetics did not exist. It was cosmetic chemistry, so it was conditioners, oils, things that work on the outside, which we still use today and still have a place. But for our clients, they think that that's what's making their hair good, and actually it's only making it shine. So पॉला ने जब हेयर ड्रेसिंग स्टार्ट की थी तो तभी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते थे जो सिर्फ शैम्पू, कंडीशनर्स और ऑयल्स जैसे प्रोडक्ट होते थे जो हेयर के ऊपर काम करते थे और वो सिर्फ हेयर को शाइन देते थे. But I think those things still have a place today. I just think that technology moves on so fast that it deliberately then moved on to bond builders because, you know, especially with social media. You know, when I first started hairdressing, social media did not exist. It blows my mind a little bit. So literally everything was word of mouth. So you had to remove colour, treat colour, send them away with product, come back again, and it took ages to actually get where you needed to be because all we had was cosmetic chemistry before it led on to bond building.
Thank you. So, do you want to translate that? So एक पॉला कह रही कि इससे पहले हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट्स होते थे कि हम क्लाइंट को कलर करके भेज देते थे और फिर वापस सैलून बुलाते थे, फिर से वही प्रोडक्ट्स डीप कंडीशन बॉन्ड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स आने लग गए, जिसकी वजह से आप क्लाइंट को थोड़ा और हेल्प दे सकते थे उनके हेयर के लिए. Yeah. And I think Paul is right that cosmetic chemistry is an evergreen within the industry because we need those products to give